Hi, welcome online classes. Myself, Mr. Bhausaheb Dabade, your geography teachers. Dear student, last online lecture we were discuss about geography chapter number 2 landforms. Okay, in this lesson we will discuss some important landform. For example, mountain, ocean, glaciers, plateau, valley, hill, island. Okay, there are number of landform created by nature on the earth surface. Okay, we discuss in last lecture mountains. What is meaning by mountain? Mountain is a high area अराउंड द एलिवेटेड सराउंडिंग रीजन्स. मतलब जो साइड में जो एरिया है ये एरिया से इनकी सी लेवल से हाइट ज़्यादा रहती है. द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स, ओके, द फोल्ड माउंटेन्स, volcanic mountain, these are the important types of mountain. So student, today we discuss about next point in the chapter valley. Okay, a valley is a low area between hills. It is produced through faulting. It is formed when there are at least two parallel faults. Plains and the rocks in between the two fault plains have subsided. The typical examples of valleys include the Great Rift Valley of Africa, then Red Sea and the Gulf of Suez. The Nile also flow through this rift valley in one part of its course. The Dead Sea, the Valley of Jordan and the Rhine Valley of Europe are also rift valley formed through the faulting. It is believed that the valley of river Narmada in India has also been formed through the activity of faulting. Student, valley means a valley is a low area between hills. Look at the image. There are two hills, and the between of these two hills there is a one river or the one slope area. It is called as valley. Like this valley shape, capital V, English capital V shape valley created by nature in the number of example. The Great Rift Valley located in Africa, Narmada Valley located in India, and Sandan Valley located in Maharashtra near Bhandardara Dam. There are number of example in valley in overall the world. Okay, वैली क्या है? दोनों हिल के बीच में एक रिवर जैसा एरिया है, इनको वैली बोला जाता है. अ वैली इज लो एरिया बिटवीन हिल्स. अंडरस्टूड. नेक्स्ट पॉइंट, द प्लेट्यूज. The plateau is a broad and rather flat area of land rising sharply above the surrounding lowlands. They appear like tablelands. प्लेटू को टेबल लैंड भी बोला जाता है. प्लेटू मीन्स माउंटेन भी नहीं, प्लेन्स भी नहीं. इनकी हाइट ज़्यादा रहती है लेकिन वो ऊपर फ्लैट रहता है. द प्लेटू इज़ अ ब्रॉड एंड रैदर फ्लैट एरिया ऑफ लैंड राइजिंग शार्पली अबोव द सराउंडिंग लो लैंड्स. मतलब लो लैंड से जो भी कुछ माउंटेन से, ये माउंटेन जैसा हाइटेड है लेकिन उनका एरिया फ्लैट रहता है. इट इज़ कॉल्ड एज प्लेटू. इनको टेबल लैंड्स भी बोला जाता है. मोस्ट ऑफ देम कवर थाउजेंड्स ऑफ स्क्वेयर किलोमीटर्स इन एरिया. द डेक्कन प्लेटू ऑफ इंडिया is an example of the plateaus. Some of the plateaus are quite high, but they do not have pointed peaks like the mountains. The Tibet or the Tibetan plateau is the highest plateau of the world. Large parts of Africa, Australia, Asia and North America are occupied by plateaus. Student, हमारे इंडिया में 3 प्लेटू हैं. डेक्कन प्लेटू, मालवा प्लेटू एंड छोटा नागपुर प्लेटू. डेक्कन प्लेटू इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ
Maharashtra state located in the Deccan Plateau near the Western Ghat. Okay, Mahabaleshwar is a very great example of the plateaus. It is called as tableland. महाबलेश्वर के नज़दीक पासगनी में जो एरिया है उनको टेबल लैंड बोला जाता है. सो प्लेटू इज़ अ ब्रॉड and the rather flat area of land rising sharply above the surrounding lowland. Lowland से ऊपर है लेकिन mountains ऐसा peak नहीं है, but they do not have the pointed peaks like the mountains. Mountains ऐसे peak नहीं है लेकिन height है. Tibetan plateau is the highest plateau of the world. पूरे वर्ल्ड में तिब्बत नंबर 1 का प्लेटू है. ओके, इंडिया में भी 3 प्लेटू है, मालवा प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू एंड डेक्कन प्लेटू. अंडरस्टूड. नेक्स्ट पॉइंट, प्लेन्स. अ प्लेन इज ब्रॉड एरिया ऑफ रिलेटिवली फ्लैट लैंड. मतलब जो प्लेन रहता है जिनकी लैंड फ्लैट है, ये फ्लैट एरिया को प्लेन बोला जाता है. अ प्लेन इज अ ब्रॉड एरिया ऑफ रिलेटिवली फ्लैट लैंड. प्लेन्स डू नॉट यूजुअली हैव अ हाइट अबव 160 मीटर, but many plains above 400 meters exist in many areas. The plains are usually lowlands. Many of them are smooth while others are slightly rolling. प्लेन जो है ये फ्लैट एरिया रहता है. ये प्लेन्स नेचर ने डेवलप किया. रिवर के पानी के साथ जो भी कुछ सॉइल और अदर मटेरियल आता है माउंटेन से, ये वैली एरिया में डिपॉजिट होता है. उस एरिया पे जो डेवलप होता है नेचुरल फीचर्स, उनको बोला जाता है प्लेन्स. अंडरस्टूड. Classification of plains. Plains can be classified by many ways, but the best way to classify them is according to their mode of formation. क्लासिफिकेशन अलग अलग के टाइप से प्लेन्स के, लेकिन 2 क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. हम देखेंगे कौन से है. द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेन्स. नंबर 1, स्ट्रक्चरल प्लेन्स. Structural plains are relatively undistributed horizontal surface of the earth. They are structurally depressed area of the world that make up some of the most extensive natural lowlands of the earth's surface. So students, structural plains due to the endogenic force and area can be rise of lowland. The actions are called the uplift and subductions. Respectively, these actions causes plains to be formed. They are called structural plain. Okay, these plains are formed by the endogenic force. हमने देखा एक्सोजेनिक फोर्स और एंडोजेनिक फोर्स. ये स्ट्रक्चरल प्लेन एंडोजेनिक फोर्स से डेवलप हुए हैं, मतलब वोल्केनो अर्थक्वेक की वजह से डेवलप हुए. These are either formed due to upliftments or subsidence or the continental shelf. Okay, the great coastal plains of USA between the Appalachian and the Atlantic Ocean and the Malabar coastal plains of India are formed due to the upliftment of continental shelf. Whereas the vast plains of Russia and the central lowlands of Australia have been formed ड्यू टू सबसिस्टेंस ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ. ये स्ट्रक्चरल प्लेन हमें यूएसए में मिलता है, एप्लेचियन और एटलांटिक ओशन के बीच में. हमारे इंडिया में भी है, केरला के साइड में जो मलबार कोस्ट है, ये स्ट्रक्चरल प्लेन का एग्जाम्पल है. ये स्ट्रक्चरल प्लेन जो एंडोजेनिक फोर्स है हमारे अर्थ के अंदर, इंटीरियर ऑफ द अर्थ में जो लावा है, वोल्केनो है, ये वोल्केनो से ये स्ट्रक्चरल प्लेन डेवलप हुई. मलबार प्लेन और मलबार कोस्ट इज एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चरल प्लेन. अंडरस्टूड. नेक्स्ट, सेकेंड नंबर क्लासिफिकेशन, depositional plains. The depositional plains are formed as a result of depositional of sediments in lowlands such as depression like and sea floors.
Most plains of the world are depositional plain. The depositional work is many done by river, glacier, wind, sea waves and volcanic eruptions. The depositional plains. These plains are formed by the depositional activity of various geomorphic agents. When plains are formed by the river deposits, they are called as the river or alluvial plains. The depositional of sediments in lake gives rise the latrine plains of lake plains. The valleys of Kashmir is an example of the latrine plains. When the wind is the major agents of deposition, those plains are called the lowest plain. स्टूडेंट ये डिपोजिशनल जो प्लेन है ये रिवर, ग्लेशियर, विंड और सी वेव्स की वजह से ये प्लेन डेवलप हुए हैं, इसलिए उनको बोला जाता है डिपोजिशनल प्लेन. हमारे इंडिया में जो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर ने बनाया है ये प्लेन का नाम है सुंदरबन. ये वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्लेन है. ओके, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन ऑफ इंडिया, होंग हो ऑफ चाइना, मिसिसिपी ऑफ यूएसए आर मेजर डिपोजिशनल प्लेन्स ऑफ द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में ये फेमस प्लेन डेवलप किए रिवर ने. सुंदरबन प्लेन्स लोकेटेड इन इंडिया and these plains are developed by Ganga Brahmaputra river. It's very big and the wonderful natural activity, Sundarban plains. Understood? The depositional plain is the most important plains of agriculture development and overall the industrialization relation between two water and the natural resources. Okay, depositional plain is very great role of agriculture development. Understood? Student, next point, the cold desert, Ladakh. Ladakh is located in Jammu and Kashmir. हमारे इंडिया का पार्ट है, उनको कोल्ड डेजर्ट बोला जाता है. Ladakh is a cold desert laying in the great Himalayas on the eastern sides of Jammu and Kashmir. The Karakoram range in the north and the Jaskar mountains in the south enclose it. The several rivers flow through Ladakh, Indus being the most important among them. The rivers form deep valley and gorges. The several glaciers are found in Ladakh, for example, the Gangri glaciers. ये जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है लद्दाख. इनको कोल्ड डेजर्ट बोला जाता है क्योंकि पूरा के पूरे साल भर यहाँ पे क्या है, बर्फ़ है, ग्लेशियर है, इसलिए इनको कोल्ड डेजर्ट बोला जाता है. The number of picnic spot and the tourism location located in these Ladakh regions. So students, Indus River being on this important of them, the rivers from deep valleys and gorges. बहुत सारे rivers ये लद्दाख रीजन में स्टार्ट हुए हैं क्योंकि ये हिमालय का पार्ट है. अंडरस्टूड? The altitude in Ladakh the varies from about 3000 meter in the Kargil to more than 8000 meters in the Karakoram. Due to its high altitude, the climate is extremely cold and dry. The air at this altitude is so thin that the heat of the sun can be felt intensely. The day temperature in summer are just above 0 degree and the night temperature well below minus 30 degrees Celsius. It is freezing cold in the winters when the temperature remains below minus 40 degrees Celsius for most of the time. स्टूडेंट, इतना टेम्परेचर कोल्ड है कि समर में भी 0 डिग्री सेल्सियस है, मतलब बर्फ़ रहता है, एंड नाइट में तो माइनस 30 माइनस 40 डिग्री टेम्परेचर रहता है. सो यू कैन इमेजिन इट्स वेरी कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट. सो दैट्स वाई लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड द कोल्ड डेजर्ट. इसलिए इनको कोल्ड डेजर्ट बोला जाता है. बहुत ही ठंडा ठंडा क्लाइमेट है. एज इट लाइज इन द रेन शैडो ऑफ द हिमालयाज देर इज अ लिटल रेनफॉल एज लो एज 10 सेंटीमीटर एवरी ईयर. द एरिया experiencing the freezing winds and burning hot sunlight. You will be surprised to know that if you sit in the sun with your feet in the shade, you may suffer from both sunstroke
and frost bite at the same time. मतलब बहुत ही कोल्ड टेम्परेचर है, रेन शाडो जोन में है लद्दाख रीजन हिमालय माउंटेन के. ओके, टेम्परेचर इज़ वेरी कोल्ड एंड लद्दाख इज़ लोकेटेड इन रेन शाडो जोन. मतलब बारिश बहुत कम होती है, ओनली 10 सेंटीमीटर इन एवरी ईयर. पूरे एक साल में 10 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है लद्दाख रीजन में, इसलिए उनको रेन शाडो जोन बोला जाता है. व्हाट इज मीनिंग बाय रेन शाडो? एन एरिया ऑफ रेनफॉल ऑन द लीवर्ड साइड्स ऑफ माउंटेन. माउंटेन के साइड में है, बारिश बहुत कम होती है, इसलिए उनको रेन शाडो जोन बोला जाता है. अंडरस्टूड? द कोल्ड डेजर्ट टेम्परेचर इज वेरी वेरी लेस. At the summer, daytime temperature is 0 degree and at the night time temperature is minus 30 degrees Celsius. So that's why Ladakh is also called the cold desert. Understood? Next point, flora and fauna. Due to high aridity, the vegetation is sparse. There are scanty patches of grasses and scrubs for animals to graze. Groves of willows and the poplars are seen in the valleys. During the summer, fruit trees such as apples, apricots, and walnuts bloom. Several species of birds are sighted in the Ladakh. Robins, redthroats, Tibetan snowcock, raven, and hope are the common. Some of these are the migratory birds. The animals of Ladakh are the wild goats, wild sheep, yak, and the special kinds of dogs. The animals are reared to provide milk, meat, and hides. Yak milk is used to make the cheese and butter. The hair is the sheep and goat is used to make woolens. Student, difference between flora and fauna. Flora means some important species, vegetations, and fauna means animal depend on this vegetation. Understood? Flora means vegetation and fauna means depend on this animal of vegetation. ये लद्दाख रीजन में है, बर्ड है, माइग्रेटरी बर्ड है लद्दाख में. द तिबेटियन स्नोकॉक, the number of animals like milk and meat provided animal. Yak animal is very important for the milk. These milk used to make cheese or butter in the Ladakh regions. The hair of the sheep, goat is used to make woolens. क्योंकि टेम्परेचर बहुत कोल्ड है, इसलिए सीप और गोट के हेयर वुलन के रूप में यूज़ करते हैं लद्दाख के लोग. अंडरस्टूड? डिफरेंस बिटवीन फ्लोरा एंड फ्यूना. The first image means flora and second image is fauna. Understood? Next point, people of Ladakh region. Ladakh region में जो people है, ये people का important है. क्या क्या रोल है ये लोगों का हम देखेंगे. Do you find any resemblance between the people of Ladakh and the inhabitants of Tibet and the Central Asia? The people here are either Muslim or Buddhist. In fact, the several Buddhist monasteries dot the Ladakhi landscape with their traditional gompas. Some famous the monasteries are the Hemis, Thiski, the Se, and Lamuru. The traditional festivals, student Muslim and Buddhist people located in this Ladakh area, and the traditional festival monasteries. This traditional festival it is called as Gompas. Understood? In the summer season, the people are busy the cultivating barley, potatoes, peas, beans, and the turnip. The climate in winter's month is also harsh that people keep themselves engaged in the festivities and the ceremonies. The women are very hardworking. They work not only in the house and fields but also manage small business and shop. Leh, the capitals of Ladakh, is well connected both by road and air. The national highway A1 connects Leh to Kashmir Valley through the Zojila Pass. Can you name some more passes in the Himalayas?
Nathula Pass, Zojila Pass, these are the passes. Passes means kinder, located near the Himalaya or Jammu and Kashmir. सो स्टूडेंट जो पीपल है लद्दाख रीजन में वो वुमेन बहुत हार्ड वर्क करते हैं, हाउस में भी काम करते हैं. दीज एरियाज आर द इम्पॉर्टेंट टूरिज़म प्लेसेस. बहुत सारे टूरिज़म एक्टिविटीज़ वहाँ पे है. ये टूरिज़म एक्टिविटी के लिए पर्यटक मतलब टूरिस्ट पीपल आते हैं. तो बिजनेस डेवलप किया है वुमेन लोगों ने. और पीपल लोग क्या करते हैं, मेंस लोग क्या करते हैं, कल्टिवेटिंग एग्रीकल्चर, पोटैटोज, बीन्स. दीज क्रॉप्स आर वेरी फेमस इन विंटर सीजन. मतलब एग्रीकल्चर का कल्टिवेटिंग का काम पीपल लोग करते हैं, जेंट्स लोग करते हैं. और वुमेन लेडीज़ वहाँ पे बिजनेस करते हैं, टूरिज़्म रिलेटेड बिजनेस. अंडरस्टूड. लेह इज़ कैपिटल ऑफ लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर एंड लेह कनेक्टेड बाय द नेशनल हाईवे. ओके. वन मोर इम्पॉर्टेंट फेमस हिल स्टेशन. लुक एट द थिस्की मोनेस्ट्री. Thiski Monastery is one of the famous monastery of Ladakh. Okay, tourism is a major activity with several tourists streaming in from within India and abroad. Visit to the Gompos trek to see the meadows of glaciers, the witnessing and the creations of the festivals are important activities. ये लोगों की जो टूरिज़म प्लेसेस है, ये एक्टिविटी है देखने के लिए ये लोग जाते हैं. कौन से? इंडिया से और पूरी ओवरऑल वर्ल्ड से. लाइफ ऑफ पीपल इज अंडरगोइंग चेंज टू द मॉडर्नाइजेशन, बट द पीपल ऑफ लद्दाख हैव ओवर द सेंचुरीज लर्न टू लिव इन बैलेंस एंड हार्मोनी विथ नेचर ड्यू टू द स्कैरिसिटी of resources like water and fuel. They are used with the revenge and care. Nothing is discarded or wastage. So student, ये जो लोग हैं ये टूरिज़म इंडस्ट्री में डिपेंड है. लद्दाख है ओरी द सेंचुरीज, मतलब ओल्ड एरिया है. अपने पुरानी जो आइसलैंड है, कोल्ड डेजर्ट है, इस पे डिपेंड है. मोस्ट ऑफ द इकोनॉमी डिपेंड ऑन टूरिज़म इंडस्ट्री. So student, today we discuss about geography chapter number 2, landform, valley, importance of mountains, then importance of plateaus, then importance of plains, the classification of plains. There are two types of plains: structural plains, depositional plains. And we discuss important point, the cold desert Ladakh and the flora and fauna, importance of people and the business and overall the activity of the Ladakh people. Understood? Remaining part on this chapter we shall explain in next online lecture. So my dear student, thank you. Take care.